नमस्ते सर। जी जी दादा, हम लोगों ने पिछले बार सीसीए रूल के जी रूल 13 तक कवर किया था। आज हम लोग रूल 14 से आगे बढ़ रहे हैं। और जी ये मैं दर्शकों को बता दूं, इसमें से जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट अभी हैं या होने वाले हैं या हो चुके होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी यहाँ से बिल्कुल सर। एक्चुअली शुरू होता है कहानी। मतलब ये बोल रहा है कि मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी का प्रोसीजर क्या है, वहां से शुरू कर रहे हैं रूल जी 14। जी तो रूल जी 14 को मैं आपके सामने डीओपीटी के साइड से शेयर करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ करके। आज मैंने जी जी दूसरा जी वाला पॉइंट बोला था, थोड़ा ये देखेंगे कैसा रहेगा। ये पार्ट 4 बोल रहा है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी की बात कर रहा इम्पोजिंग पेनल्टीज। हाँ, है। ये पेनल्टी इम्पोज करने की बात कर रहा है। पेनल्टी पहले जो पार्ट है ना, 11 में देखा था ना, वहां से आ रहा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल हम लोग देखे थे उसमें। और नीचे पढ़ते हैं सर, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। अब पार्ट 4 तो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, इसमें मेजर है माइनर है। तो 14 है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। नंबर 1, नो ऑर्डर imposing any of the penalties specified in clauses 5 to 9 of Rule 11 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and Rule 15, or in the manner provided by the Public Servants Enquiries Act 1850, where such inquiry is held under that act. तो ये बोलना, ये बेसिकली यही चाह रहा है कि इंक्वायरी होगी इसके लिए। मेजर पेनल्टी अगर आपको लगाना है, जो 5 से लेकर के 9 रूल 11 में लिखी हुई है, वो पेनल्टी अगर आपको लगाना है तो इंक्वायरी मैंडेटरी है। जी और जी जी। तरीका जो है इसमें बताया गया, पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850 में तरीका किस तरह मतलब इंक्वायरी होल्ड करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। जी सर। अब 2, whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against a government servant, it may itself inquire into or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servants Enquiries Act 1850, as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof. एक तो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद कर सकता है इंक्वायरी, नहीं तो किसी को अपॉइंट कर सकता है अंडर द रूल और अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट, पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850, एज द केस में भी, जैसा जरूरत हो। जी यही तो बोलना चाह रहा है बेसिकली। अब provided there where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3C of the Central Civil Services Conduct Rules 1964, the Complaints Committee, ये उस केस के बाद आया, मतलब जो लैंडमार्क जजमेंट जो था उसके बाद लगता है कि ये घुसाया गया ना सर, विशाखा वाला। Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3C of the Central Civil Services Contract Rules 1964, the Complaints Committee established in each ministry or department or office for inquiring into such complaints shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules, and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules. मोटे तौर पर एक विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बता रहा है। यदि कोई कंप्लेंट्स कमिटी हो, दैट कमिटी, कि अगर मान लीजिए सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई केस है जो रूल 3 ऑफ कंडक्ट रूल में आता है, तो इंक्वायरी कमेटी, एक कंप्लेंट कमेटी बैठेगी एंड दैट कमेटी विल एक्ट एज इंक्वायरी अथॉरिटी, as if it's appointed by the disciplinary authority for the purposes of these rules. जी, explanation. Whether disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference to subrule 7 to subrule 20 and in subrule 22 to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority. मतलब जहाँ disciplinary authority खुद inquiry hold कर रही है, तो any reference to these rules to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.
3, where it is proposed to hold an inquiry against a government servant under this rule and Rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up. क्या क्या? 1. The substance of the imputations of misconduct or misbehavior into their definite and distinct articles of charge. तो सबसे पहला आर्टिकल्स ऑफ चार्ज जिसमें सब्सटेंस रहेगी ऑफ मिसकॉन्डक्ट और मिसबिहेवियर जो भी हो. स्टेट 2, a statement of the imputations of misconduct or misbehavior in support of each article of charge, which shall contain a statement of all relevant facts, including any admission or confession made by the government servant, a list of documents by which, and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained. तो इसमें मैंडेटरी ये सब है. एक तो बताना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में. In disciplinary inquiry proceedings parlance, this is called charge memo. Charge memo. जी Charge जी memo. जी जी. और साथ में डॉक्यूमेंट्स रहेगी. What are the documents being relied upon, including any admission or confession. अच्छा, फिर आते हैं 4 में. जी सर. इस रूल में एक गड़बड़ नहीं है. ये क्या बोल रहा है? The list of documents has been provided. What about the documents? The documents have to be asked for. वो तो मांगना पड़ेगा सर. कभी देता है सर? आज तक किसी को दिया ही नहीं है. वो लिखना पड़ता है फिर कि डॉक्यूमेंट्स दीजिए, नहीं तो मैं कैसे बताऊं क्या है नहीं है. तो मांगना पड़ेगा ना. तो देना चाहिए था. लिस्ट देने से तो कोई फायदा नहीं है. डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए so that I can. So what is the harm in writing that list of document by which this and that, and then एक लिख देता है यहाँ पर and the documents which are to be relied upon or which are mentioned in list of documents, वो भी लिख देता है. कोई there is no harm. कोई बेवकूफ ने बना था and nobody has thought it fit to touch this. मैं तो हर बार देखता हूँ कि लोग लिखते हैं kindly provide the documents. अच्छा, the disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the government servant a copy of the articles of charge, the statement of imputations of misconduct or misbehavior, and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained, and shall require the government servant to submit within such time as may be specified a written statement of his defense and to state whether he desires to be heard in person. हो गया, ठीक है. ये एक आई वॉश है सर, दिखाने के लिए कि आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है. ये आपके अगेंस्ट में चार्ज है. फलाना आदमी, ढिमकाना आदमी जो है आपके अगेंस्ट में विटनेस देगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास. आपको यदि कुछ बोलना हो तो आप आकर बोलिए. अच्छा, फिर आ रहे हैं इसमें रूल 5 है ऑन रिसीट ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस. मतलब यदि रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देते हैं और he desires to be heard in person, the charged officer, तो written statement of defense मिलने के बाद the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted. कोई admit करता ही नहीं है, फिर भी shall inquire into such articles of charge as are not admitted, or it considers it necessary to do so, appoint under subrule 2 an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the government servant in the written statement of defense, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and act in the manner laid down in Rule 15. अच्छा, जहां मैं सब एक्सेप्ट कर रहा हूँ चार्ज, तो उसके बाद और ये इसका क्या जरूरत है? रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज. जहां एडमिट ही कर रहा हूँ मैं, एडमिट कर लिया है, उसने चार्ज बनाया है, तो अपनी फाइंडिंग जो है वो बोलेगा ठीक है, आई फाइंड दैट दिस चार्ज इज प्रूव्ड बिकॉज़ ही इज एडमिटिंग. नहीं करके उठा के रगड़ देगा उसको. इसीलिए तो सब नहीं एडमिट कर रहा हूँ तो ऐसे ही रगड़ देगा. हाँ, उसमें और रिकॉर्डेड फाइंडिंग्स क्या है? मतलब इतना लिखेगा ना, दैट आफ्टर परusing द रिटन सबमिशन ऑफ द चार्ज ऑफिसर,
I'm of the opinion करके मार देगा वो बस। और जो आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस, नहीं उतना कहाँ लिख रहा सर, आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस एज इट मे थिंक फिट। अब एविडेंस का जरूरत क्या है, जहां मैं बोल रहा हूँ यस आई एडमिट दिस मिस पोर्शन ऑफ द चार्ज, तो एविडेंस का एविडेंस एज इट मे थिंक फिट ना। अभी यहाँ हाँ पर यह है कि अगर वो चार्ज ऑफिसर ने कुछ अगर मान लीजिए चीजें ऐसी लिखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट 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 करके, और कुछ और एविडेंसेस उसने मिस किए हैं, तो उनके एविडेंसेस को भी ले लेगा ना साथ में कि हाँ ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ मैंने दिस तो डायरेक्टली एडमिट ही कर रहा है। चलिए आप 10 मतलब इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकॉन्डक्ट है, 10 ही को मैं एडमिट कर रहा हूँ, तो फिर एविडेंस का जरूरत ही क्या है? that I have considered the state representation submitted by charge officer and taken account the all evidences of the record करके लिख देगा वो, इसीलिए वो लिख रहा है उसको, उधर भी वो कर रहा है। मतलब merely on the basis of the representation submitted by the charge officer is not enough। अगर वो ये लिखता है तो ऑर्डर गलत हो जाएगा लगता है। मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ। तो 5A का मतलब 5A का यूसेज बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम लोग ही एडमिट करते हैं, तो 5B इज मोर। वो भी क्या होता है, अगर पट गई नीचे ऊपर जाके बोल दिया यार तू एडमिट कर दे जल्दी से, मैं तेरे को मतलब ऐसे ही कुछ पनिशमेंट कम दूंगा, कम पनिशमेंट दूंगा, 2 महीने का इंक्रीमेंट बंद करा दूंगा, ऐसा बोल करके फंसा देता है। अच्छा जो फंसने वाला नहीं है, सो इफ नो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे इटसेल्फ इंक्वायर इनटू द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज और मे, if it considered it necessary to do so, appoint under sub-rule 2 an inquiring authority for the purpose. Here begins the entire process. मैंने तो कभी देखा नहीं मेजर पेनल्टी के बगैर चार्ज मेमो इशू हुआ है तो कोई आदमी उसको एडमिट कोई करेगा, बेवकूफ है जो एडमिट करेगा, कोई नहीं एडमिट करता। C. Whether disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may by an order appoint a government servant or a legal practitioner to be known as the presenting officer to present on its behalf the case in support of the articles of charge. Legal practitioner or a person who is knowledgeable in law, a government servant who is knowledgeable in law, or a legal practitioner to be known as the presenting officer. An order appoint a governor and a legal practitioner, government servant appoint a governor or legal practitioner. Okay. That government servant will be well versed in law, na? Bullshit. जो जी जी। They can appoint outsider also, ऐसा करके बोल रहे हो? जी जी। 6. The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority 1. A copy of the articles of charge and the statement of imputations of misconduct or misbehavior, a copy of the written statement of defense in any submitted by the government servant, a copy of the statement of witnesses if any referred to in sub-rule 3, evidence proving the delivery of documents referred to in sub-rule 3 to the government servant, and a copy of the order appointing the presenting officer. तो एक तो आर्टिकल्स ऑफ चार्ज मतलब चार्ज मेमो जो आप बोल रहे हैं, फिर along with the statements of the imputations of misconduct or whatever is written, फिर written statement of defense. एक बार तो ले लिया, अब क्या बोल रहा है कि 6 में disciplinary authority shall where it is not the inquiring authority, where it is not the inquiring authority, मतलब inquiring authority तो अलग है, ये disciplinary authority तो मतलब वो उसके ऊपर जो है, मतलब जो चार्ज ऑफिसर है उसके ऊपर ही होगा ना। कर रहा है विदाउट अपॉइंटिंग इंक्वायरिंग ऑफिसर, तो वो क्या करेगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट करना। अच्छा हाँ, ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये सारे चीज देंगे 1 से 5 तक जितना है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस जो भी सेम चीज है, ऑलमोस्ट ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को फिर से दोबारा देगा। 7. The government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within 10 working days from the date of receipt by the inquiring authority of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehavior, as the inquiring authority may by notice in writing specify in this behalf
or within such further time not exceeding 10 days as the inquiring authority may allow. The government servant shall appear in person Outer limit before the क्या है, inquiring 10 authority के अंदर, okay. within 10 working days from the date of receipt by the inquiring authority of the articles of charge. ये एक important चीज है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ चार्ज मिलते ही 10 दिन के अंदर जो है वो 10 वर्किंग डेज. यहाँ तो बकवास कर रहा है ना, यहाँ तो इस बात का फायदा उठाते हैं ना वो लोग. फिर बोल रहा है विद इन सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 डेज एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में अलाउ. मतलब थोड़ा सा लिवरेज ये भी दिया है कि उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, उसका दया के ऊपर. गड़बड़ होती है तो 3-3 महीना 4-4 महीने के बाद इंक्वायरी शुरू करते हैं ना वो लोग. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इंक्वायरिंग अथॉरिटी के दया के ऊपर जो है, मर्सी के ऊपर चीज चल रहा है. फिर गड़बड़ यही है. ऊपर तो सही था, ठीक था. जी सर. 8A, the government servant may take the assistance of any other government servant posted in any office, either at his headquarters or at the place where the inquiry is held, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the presenting officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case so permits. मतलब ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि लीगल प्रैक्टिशनर को भी अपॉइंट कर सकता है, तो ही मे और मे नॉट एंगेज अ लीगल प्रैक्टिशनर. यदि लीगल प्रैक्टिशनर एंगेज कर रहा है तो फिर चार्ज ऑफिसर भी अपना एडवोकेट ले जाएगा, या कोई ऐसा मतलब डिफेंस असिस्टेंट ले जाएगा, जो हम लोग बाद में देखेंगे भी. डिफेंस अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास में लॉ डिग्री है तो मैं लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब जो डिफेंस असिस्टेंट है वो लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है अगर उसके पास लॉ डिग्री है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास हो. ना डिग्री सिर्फ होने से सर नहीं होगा, लेकिन इफ इज वेल वर्स्ड इन लॉ, ये भी तो हो सकता है. इज वेल वर्स्ड इन लॉ. लॉ डिग्री सिर्फ होना इज नॉट द क्राइटेरियन. आजकल अलाउ कर देते हैं वो लोग, लीगल प्रैक्टिशनर को अलाउ कर देते हैं डिफेंस. हाँ, वो तो ठीक है, वो तो आप दे ही सकते हैं. Provided that the government servant may take the assistance of any other government servant posted at any other station, if the inquiring authority, having regard to the circumstances of the case and for the reasons to be recorded in writing, so permits. Note: the government servant shall not take the assistance of any other government servant who has 3 pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance. मतलब जो हेल्प कर रहा है डिफेंस, वो डिफेंस असिस्टेंट अपीयर हो रहा है तो उसके हाथ में यदि 3 और केस हो, उस 3 और केस हो तो वो नहीं कर सकता. मतलब चौथा केस हो जाएगा. ये 3 का कैप लगा रखा है. कभी कभी होता है ना, देयर आर पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन ऑल दीज थिंग्स, तो उनको लोग पकड़ते हैं कि सर आप ही जो है इसको हैंडल कीजिए, हमारे तरफ से आप बनिए डिफेंस असिस्टेंट. तो ये कैप बना दिया कि जिसके हाथ में 3 है केस, वो चौथा नहीं ले पाएगा. फिर the government servant may also take the assistance of a retired government servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the president from time to time by general or special order in this behalf. Okay. If the government servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defense, or has not submitted any written statement of defense, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defense to make, and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record, and obtain the signature of the government servant thereon. ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ. The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the government servant pleads guilty. Nobody will ever plead guilty. The inquiring authority shall, if the government servant fails to appear within the specified period of time or refuses or omits to plead, require the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date, not exceeding 30 days after recording an order, that the government servant may, for the purpose of preparing his defense, 1. Inspect within 5 days of the order, or within such further time not exceeding 5 days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list
referred to in sub rule 3. यहाँ inspection allow कर रहा है within 5 days of the order, within such further time not exceeding 5 days, as allowed by the inquiring authority. Submit a list of witnesses to be examined on his behalf. Note: if the government servant applies orally or in writing for supply of copies, जो मैं बोल रहा था, of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub rule 3, अच्छा, only copies of statement of witnesses, हाँ ये चाहिए बिल्कुल, statements तो चाहिए witnesses के, because these documents are being relied upon in the charge memo. The inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible, and in any case not later than 3 days before the commencement of the examination of witnesses on behalf of the disciplinary authority. फिर आ रहा है, give notice within 10 days of the order or within such further time not exceeding 10 days as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in possession of the government servant, but not mentioned in the list referred to in sub rule 3. मतलब has to give a notice within 10 days of the order or within such further time not exceeding 10 days as the inquiring authority may allow for discovery or production of any documents. ये important part है for discovery or production of any documents which are in the possession of the government but not mentioned in the list. यदि rely कर रहे हैं इस पे तो ये थोड़ा सा हटकर मतलब बताया गया, लेकिन this is important. Note: the government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the government. तो यहाँ पर ये जो गिव लिख रहा है 3 में, रोमन 3 में जो 3 लिख रहा है, गिव अ नोटिस, दिस इज फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट. हाँ, तो यहाँ पे द गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ लिखने में क्या तकलीफ थी इनको? तो सर the drafting is always very poor. Clarity अगर आप खोजिएगा तो कहाँ मिलता है सर, हमेशा ambiguous रहता है सब. Framing of sentences. If the government servant applies orally or in writing for this, तो अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ूं, if the government servant give the notice, यहाँ से आ जाएगा ना, फिर शायद ये ऐसा कुछ होगा. ये कहाँ से होगा? 1 ये है inspect within 5 days. 1 2 3 if the government servant, अच्छा इसके लिए नोट है, वो सबमिट लिस्ट ऑफ दिस, ये तो यहाँ के लिए है. उसके बाद में ये नोट जो है इसके लिए है. If the government servant give a notice, inquiring authority will give a notice. यही मतलब फिर मीनिंग यही है, inquiring authority shall give a notice within 10 days of the order as the inquiring authority may allow. यहाँ तो बोल भी रहा है as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents. वो चीज omit कर गया सामने. If the inquiring authority gives a notice, shall give a notice, mandatory है. The inquiring authority shall give a notice within 10 days of the order within such further time not exceeding 10 days as he may allow. नहीं लिखा as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any document which are in the possession of the government but not mentioned in the list referred to in sub rule 3. मतलब list में जो है, the list regarding the documents relied upon. Note: the government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the government. Relevance insofar as the case in hand is concerned. The inquiring authority फिर बोल रहा, shall on receipt of the notice for the discovery or production of documents forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition. मतलब एक तारीख फिक्स किया जाएगा जिस दिन वो डॉक्यूमेंट जो लिस्ट में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट रिलाई कर रही है, गवर्नमेंट के पास है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग रिफ्यूज टू रिक्विजिशन such of the documents as in its opinion not relevant to the case. ये थोड़ा सा समझिए सर. देखिए he becomes now he is inquiring officer authority and he has got power to refuse also. Wow. नहीं, इसमें एक चीज बोल रहा है, refuse requisition of such documents as in its opinion, his opinion
not relevant to the case. मतलब relevant documents तो indicate किया ही जाएगा. ऊपर बोल रहा है नोट में, the government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced. अगर inquiring authority को he has got discretion in spite of acting the relevance discretion, refuse. तो inquiring authority को लगेगा नहीं irrelevant document मांगा जा रहा है, तब he may refuse, stating the reasons for not supplying the documents, for non-supply, stating the reasons for non-supply. ऐसा ही है सर. On receipt of the requisition referred to in Sub-Rule 12, every authority having the custody of possession of the requisition documents shall produce the same before the inquiring authority. मतलब जिनको बोला जाएगा, दूसरा जो अथॉरिटी कोई डिपार्टमेंट में हो, उसको जिस दिन प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा अंडर सब-रूल 12, उनको लाना पड़ेगा वो, जिनके कस्टडी में या पोजेशन में हो. प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी हैविंग द कस्टडी ऑफ पोजेशन ऑफ द requisition documents is satisfied for reasons to be recorded in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the state. देखिए ये चीज घुसा है. It shall inform the inquiring authority accordingly, and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents. मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट मैं मांगता हूँ, आई एम अ चार्ज ऑफिसर, that document should not pertain to the national security, ऐसा करके बोला. हाँ, तो चार्ज ऑफिसर यदि ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहा हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो या स्टेट के सिक्योरिटी को हैम्पर करे, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता. और उस डॉक्यूमेंट का जो है यदि कम्युनिकेशन भी किया गया हो इंक्वायरिंग अथॉरिटी के द्वारा कि उसको दिया जाए, तो रिक्विजिशन को मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा प्रोडक्शन का. वो अच्छा, ये भी मैंडेटरी है. हाँ, he will communicate to the government servant. Government servant has to withdraw also with that withdraw. वही तो मैं बोल रहा हूँ, विड्रॉल भी करना होगा. ये करते करते तो तभी तो इतना टाइम लगता है सर. महीने में एक बार चिट्ठी आएगी इस तरह, ये तो आगे चलते ही रहता. वजह यही है कि इतना रूल्स बना कर रखा है ना. By or on behalf of the reserved authority. On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the presenting officer and may be cross-examined by or on behalf of the government servant. मतलब प्रेजेंटिंग ऑफिसर तो ये अथॉरिटी के फेवर में अपना प्रेजेंट करेगा केस. विटनेसेस जो प्रोड्यूस किया जाएगा उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा डिफेंस असिस्टेंट के द्वारा, या चार्ज ऑफिसर खुद भी कर सकता है if he is competent enough. The presenting officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter without the leave of the inquiring authority. Re-examination तो कभी कभी जरूरत होता ही है. तो the inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit. ये अलग से दिया गया. देखिए, presenting officer का तो अलग रोल है. Shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined. Cross-examined by whom? By the charged officer or the defense assistant acting on his behalf, but not on any new matter without the leave of the inquiring authority. Then the inquiring authority, in addition to the earlier part, may also put such questions to the witnesses as it thinks fit. उसको क्लियर नहीं हो रहा होगा ना कि हाँ भाई क्या इसका मतलब आ रहा है, तो वो पूछ सकता है. अच्छा, हाँ, इसीलिए रखा है इसको. जी सर. If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the presenting officer to produce evidence not included. Sir, यहाँ देखिएगा, not included in the list given to the government servant, or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. And in such case, the government servant shall be entitled to have, if he demands, a copy
of the list of further evidence proposed to be produced, and an adjournment of the inquiry for 3 clear days before production of such new evidence. इतना मौका दे रहा है मतलब चार्ज ऑफिसर को कि वो मांग सकता कॉपी, फर्दर एविडेंस यदि ऐड किया जा रहा हो, न्यू एविडेंस, रिकॉलिंग, री एग्जामिनेशन यदि, तो he may demand copy of the list of further evidence proposed to be produced and all adjournment of the inquiry and an adjournment of the inquiry. Time भी चाहिए उसको सोचने के लिए, 3 clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the government servant an opportunity for inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the government servant to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interests of justice. ये थोड़ा सा एक ओपन मतलब एंड छोड़ दिया. इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो बहुत कुछ हो सकता था. No new evidence shall not be permitted or called for, or any witnesses shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally. Now, who will ascertain the lacuna or defect? The inquiring authority. The moment inquiring authority submit its report to the superior authority, and if he finds an lacuna, तो फिर वापस करेगा. 15 में आएगा, आता है, देखा अभी आएगा. 15 में आएगा, 15 रूल 15 में आएगा. अच्छा, फिर when the case for the disciplinary authority is closed, the government servant shall be required to state his defense orally or in writing as he may prefer. If the defense is made orally, it shall be recorded, and the government servant shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defense shall be given to the presenting officer, if any, appointed. फिर बोल रहा है, the evidence on behalf of the government's servant shall then be produced. The government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the government servant shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination, and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority. The inquiring authority may, after the government servant closes his case, and shall, if the government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence, for the purpose of enabling the government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him. मतलब ये मौका देने के लिए बोल रहा है, बार बार अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है टू make clear his defense. ऐसा ही है ना सर? ये more to show that every opportunity is being given to defend the charged officer. The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the presenting officer, if any, appointed, and the government servant, or permit them to file written briefs in the respective case if they so desire. If they so desire, बोल रहा. ठीक है. आगे. फिर बोल रहा है, the government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered does not submit the written statement of defense on or before the date specified for the purpose, or does not appear in person before the inquiring authority, or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiry authority may hold the inquiry ex parte. ठीक है. बार बार मौका देने के बाद यदि वो नहीं, वर्बली भी नहीं बोल रहा हो कुछ डिफेंस में, या रिटन कुछ सबमिट नहीं कर रहा हो स्टेटमेंट, तब तो इंक्वायरी एक्स पार्टी होगी. 21 है, वेयर अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी competent to impose any of the penalties specified in clauses 1 to 4 of Rule 11, but not competent to impose any of the penalties specified in clauses 5 to 9 of Rule 11, has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge, and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses 5 to 9 of Rule 11 should be imposed on the government servant, then that authority shall forward the records of the inquiry to such
disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties. इधर नटशेल मतलब इंक्वायरिंग 5 से 9 तक के जितने भी हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको भेजेगा, जो कॉम्पिटेंट है उसके पास भेज देगा वो। जी जी ओके, कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी पेनल्टी इन दिस बट नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ दिस पेनल्टी। अच्छा, ठीक है तमाशा। रिसीव 30 नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी अंडर 1 to 4। इसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अलग है क्या? नहीं, इंक्वायरिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अलग कर रहा है ना इसमें। वेल, disciplinary authority competent to impose this but not competent to impose this। disciplinary authority को अलग कर रहे हैं। Not competent to impose, not competent to impose 5 to 9 but competent to impose clauses 1 to 4 of rule 11। ऐसा कर दिया था, दो हिस्से में बांट दिया। तो जहां कॉम्पिटेंट नहीं है फिर आगे फिर फॉरवर्ड करेगा ना रिकॉर्ड्स ऑफ द इंक्वायरी टू सच डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, मतलब उसके ऊपर कोई होगा। सच डिसिप्लिनरी अथॉरिटी as is competent to impose the last mentioned penalties, मतलब जो इसके पावर में नहीं है वो कोई दूसरा अफसर को भेजेगा। It is of opinion that further examination of another witness is necessary in the interest of self recall the witnesses examine। okay, फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record, or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness, and may impose on the government servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules। सर कोर्ट और इसमें देखिए फर्क बहुत है। मतलब कोर्ट में जो हम लोग हमारा जो एविडेंस एक्ट में विटनेस प्रोसीजर है, इसमें देखिए अथॉरिटी खुद बार बार बुला भी सकता है, बार बार री एग्जामिनेशन करवा सकता है, लेकिन कोर्ट ऐसा कहाँ करता है। दोनों में फर्क है ना सर, कोर्ट प्रोसीजर में इसमें बहुत फर्क है। दिस इज क्वेज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग, बट देखिए इसमें विटनेस एग्जामिनेशन में बहुत फर्क है इसमें। फिर नीचे पढ़ता हूँ सर, whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence to so recorded by its predecessor or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself। मतलब ये कहने का मतलब ये कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी अगर नहीं बनी है तो वो जहां पर पहले वाले ने छोड़ा वहां से आगे चला जाएगा, बट इफ ही फील्स लाइक तो पीछे भी जा सकता है, वो ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ पीछे आ सकता है। अच्छा मान लीजिए कोई इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो लेकिन उसका मतलब वो निकल गया उस जगह से, तो केस तो बंद तो नहीं रहेगी ना, फिर कोई दूसरा ही आएगा उसमें, वहां से फिर शुरू करेगा। पार्टली रिकॉर्डेड जहां तक है उसके बाद एविडेंस जो रिकॉर्डेड बाय प्रेडिसेसर वहां तक करके फिर आगे पार्टी रिकॉर्डेड रह गया हुआ तो बाय इट्स प्रेडिसेसर एंड पार्टी देयर ऑफ। अच्छा, वहीं शुरू लेकिन एक कैच रखा है सर, प्रोवाइडेड दैट इफ द सक्सीडिंग इंक्वायरिंग अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनी ऑफ द विटनेसेस whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as herein before provided। ये पार्शियल हो या कंप्लीट हो, अब गवर्नमेंट ऑफिसर उसको फिर से जब वो आएगा तो पूरी फिर से और वो बोलेगा नहीं मैं फिर से सुनूंगा, ये एक छोड़ दिया लेवरेज, फिर से सुनूंगा मैं पार्शियल नहीं सुनूंगा, मैं फिर से सुनूंगा पूरा, ये भी एक रख दिया क्लॉज। After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain the articles of charge, the statement of imputations of misconduct or misbehavior, the defense of the government servant in respect of each article of charge, an assessment of the evidence in respect of each article of charge, the findings on each article of charge and the reasons therefore. Explanation: if in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any articles of charge different from the original articles of charge, it may record its findings on such article of charge।
मतलब दोनों में फर्क होना नहीं चाहिए। Article charge shall not be recorded unless the government servant has either admitted the fact नहीं, by आर्टिकल ऑफ चार्ज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल आर्टिकल्स। उसी की बात कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट जी द जी जी फाइंडिंग ऑन such is for this, इसके लिए ये this such is for जी this, जी, such सच article आर्टिकल। shall not be recorded unless the government servant has either admitted the fact on which such article of charge is based or had a reasonable opportunity of defending himself। हाँ देखा, तो ईपीएससी पे तो कोई ताकत ही नहीं थी कुछ करने की, जब इंक्वायरी अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती तो ये क्या कर लेगा। फिर से पढ़ता हूँ सर। प्रोवाइडेड दैट द फाइंडिंग्स ऑन सच आर्टिकल ऑफ चार्ज शैल नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस the government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge। लेकिन मान लीजिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी यदि वो अपने आप को डिफेंड ना करे तब तो फिर आगे बढ़ेगी ना। अब आ रहा है इस पे। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी वेयर इट इज नॉट इटसेल्फ a disciplinary authority shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include the report prepared by it under clause 1, the written statement of defense if any submitted। सेम चीज बार बार ऑलमोस्ट आ जाएगा। the oral and documentary evidence, written briefs if any, filed by both the presenting officer or the government servant of both during the course of inquiry, the orders if any made by the disciplinary authority and inquiring authority in regard to the inquiry, government of India's decisions, written briefs if any, filed by either of them or both। अगर एक ने भी दिया और रिटन ब्रीफ वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यदि दोनों देते हैं तो दोनों का होगा। Then all the orders made from time to time। ठीक है, इन रिगार्ड टू द इंक्वायरी की बात कर, कोई अगर ऑर्डर और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's decisions, instructions to avoid procedural delays in the disposal of discipline cases। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें नहीं, इसमें चाह रहा है कि जल्दी मतलब हो। हाँ ठीक है, दूसरा फालतू का समय बर्बाद ना हो, ये बोलना चाह रहा है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है पे कमीशंस रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डर्स देयरऑन। ठीक है, सप्लाई ऑफ कॉपीज और डॉक्यूमेंट टू द डेलिंक्वेंट ऑफिसर। वो तो देना ही पड़। डेलिंक्वेंट मतलब चार्ज ऑफिसर। एग्जामिनेशन ऑफ पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द केस, सॉरी to the signature of the officer of the measure to prevent tampering of records or documents during inspection by delinquent officials। measures to prevent मतलब सबसे बड़ा मेजर है कि उसको जो मतलब सस्पेंड आप कर रहे हो तो ऑफिस जा ही नहीं पाएगा फिर। दैट इज द ओनली मेजर परहैप्स व्हिच कैन बी टेकन। तो दूसरा कोई करेगा उसके बिहाफ में, कोई डॉक्यूमेंट थोड़े निकाल लेगा या फाड़ देगा या छेड़छाड़ करेगा, टैंपरिंग करेगा। To prevent that, the charged officer is always suspended। assisting government servants, ये CCS CCA rules में है। But the date and time of the hearing should be intimated to assistance of any government servant to present the case on his behalf, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। अभी आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट पर ऑप्शन हैज एग्जामिन द विटनेसेस। ठीक है, conduct of inquiry against delinquent officers by gazetted officers, senior officers। okay, ठीक है, ये committee subordinate so and so had assembled the question of inquiry officer to conduct oral inquiry into the charges leveled against the committee has ordered नहीं, the inquiry should be conducted by an officer who is sufficiently senior to the officer whose conduct is being inquired into। ये मेन चीज है इसमें, मेन चीज है। ठीक है, ठीक है, ये मेन चीज यही है इसमें, अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये पढ़ने जरूरत है। इंक्वायरी बाय द डिसिप्लिनरी नहीं, मेन इसमें जो नजर आएगा मैं तुरंत बता दूंगा आपको सब। So the charges can be dropped at the stage of initial। हाँ, yes, charges can be dropped provided that there are certain provisions उसमें। See, exercise of powers to drop the charges after consideration of written statement of defense।
will be subject to the following conditions. देखिए, in cases arising out of investigations by the CBI should be consulted before decision is taken to drop any of all the charges on the basis of the written statement of defense submitted by the accused government servant. The reasons recorded by the disciplinary authority for dropping the charges should be intimated to the CBI. अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीआई को उंगली करे कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई नहीं ड्रॉप करता है, बकवास है। फिर भी रखा है प्रोविजन, फिर सीवीसी का भी रखा है। देखिए, सीवीसी का भी रखा है। सिमिलरली सीबीआई या सीवीसी का भी रखा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी परमिशन टू एंगेज। हाँ, ये है परमिशन। देयर मस्ट बी गुड एंड सफिशिएंट सर्कमस्टांसेस requiring the engaging of a legal practitioner to assist the charged officer. May engage, क्या लिखा है ये? For imposition of a major penalty may not engage a legal practitioner. May engage, हाँ. Before the inquiry, unless the presiding officer appointed by is a legal practitioner or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case. So permits. नहीं, परमिट तो कर ही देता है आजकल, क्योंकि कोर्ट जाने से फिर कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई सही है। उसने यदि किसी का हेल्प मांगा हो तो आप क्यों बाधा डाल रहे हैं इसमें? But when on the authority the case is being presented by prosecuting officer of the CBI is having sufficient knowledge of law, तो ओके ठीक है, तो उसमें तो फिर रखना ही पड़ेगा ना। रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। वो तो जो एंगेजिंग डिफेंस असिस्टेंस, जिसके पास केसेस है उनको नहीं लेगा, वही तो बात कर रहा है शायद। दूसरे से आना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये भी है वहां पर। फिर सब गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अपीयरिंग फॉर डिफेंस कंडीशन, क्या बोल रहे हैं? हाँ, रिटायर्ड तो आते ही है। Here the suppression of the earlier order, it has been decided in terms of that the government servant concerned may take the assistant of, अच्छा वो जो subject to the following conditions बोल रहा है, should have retired from service। रिटायर्ड तो जब नाम ही है तो रिटायर्ड तो होना ही चाहिए फ्रॉम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ द रिटायर्ड आल्सो सर्वेंट इज गवर्नमेंट सर्वेंट इज आल्सो अ लीगल प्रैक्टिशनर, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंगेजिंग अ लीगल प्रैक्टिशनर by a delinquent government servant to present the case on his behalf contained in rule so and so would apply। लेकिन फिर आजकल कोर्ट अलाउ कर देता है ऐसा। The retired government servant concerned should not take the assistance, क्या लिखा है? Should not 7 cases at a time। हाँ, ये बड़ा तमाशा है इसके साथ में भाई। Simultaneous action of prosecution in a court and initiation, दोनों चल सकता है सर। लेकिन हम लोग ये प्ली लेते हैं कि my defense will be disclosed, but it is not barred। However, the charge in the criminal case is of a grave nature which involves complicated questions of law and fact. It would be desirable to stay the departmental proceedings till the conclusion of the criminal case। This will depend upon the nature। केस चल रहा है तो वहां से उसको भी तो उठा के फेंक देते हैं ये लोग। कम से कम उसको रुकना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं वहां पर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के सामने जाऊंगा और वहां पर अपने सारे डिफेंस रिवील कर दूंगा तो वहां तो ये बता देंगे। और एक चीज है, मान लीजिए एक्विटल हो जाता क्रिमिनल केस में, लेकिन प्रोसीडिंग फिर चल सकती है। ये भी जब ड्राफ्ट चार्ज शीट आती है ना सीबीआई से कहीं से भी, तो उसमें ये लोग एक चार्ज और जोड़ देते हैं जो उनसे डिफरेंट हो, जिसमें फिर बजाते रहते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, दिस चार्ज इज डिफरेंट। ये वही है ना शायद सर्विस, ताकि हम कोर्ट ही ना जा पाए ना। There would be no bar to proceed simultaneously with departmental inquiry and trial of a criminal case unless the charge in the criminal trial is of grave nature involving complicated questions of fact and law। The apex court has referred to the conclusions given in Captain M. Paul Anthony's case। तो इसमें तो देखिए ये क्या पॉल एंथनी का जो मतलब प्रिंसिपल्स है जो भी है उसमें, उसके बाहर वो चले ही जाएंगे, कुछ नया ही मतलब निकाल कर खड़ा करेंगे ताकि आप कोर्ट जाकर कुछ कर ही ना पाए। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नाक का कोई जजमेंट आया था, कॉन्विक्टर साहब ने 2014 में कुछ दिया था, उसमें भी वही बोला है रोक दो। व्हाट इज द नेसेसिटी
क्यों कर रहे हो, मतलब वहां जी पर भी जी जज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बोलता है यार रोक दो, कोई बोलता है नहीं 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 कोई मतलब नहीं है चलने दो, बोबड़े होता तो कैसे करने दो। अच्छा, एक्शन ऑन जी इंक्वायरी जी रिपोर्ट। हाँ हाँ, कौन सा सर? हाँ, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। द 15 रूल डिसिप्लिनरी 15 अथॉरिटी इज, रूल if 15। it is not itself the inquiring authority, may for reasons to be recorded in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report, and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold further inquiry according to the provisions of rule 14 as far as may be। जैसे आप पूरे बोल सर, रहे हो कि इफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइंड एनी फ्लॉ, तो वो हाँ, दोबारा इंक्वायरी ऑफिसर दोबारा को इंक्वायरी दोबारा को रेफर करेगा। हाँ। बट इफ देयर इज नो फ्लॉ, फिर भी करते हैं तो वहां तो फंस जाएंगे फिर ना ये। The अभी देखिए disciplinary आगे क्या authority बोल shall forward, or cause to be forwarded, a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reasons for disagreement. This is important. With its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority on any article of charge। any article of charge बोल रहा है, मान लीजिए 5 चार्ज है, एक में एग्री नहीं कर रहा तो फिर मतलब रिमिट कर सकते हो, गिविंग टेंटेटिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट if he so desires। Then the government servant shall be required to submit, if he so desires, his written representation or ये submission बोल रहा है within कि 15 अगर days। इंक्वायरी ऑफिसर के, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक हैंडल दे रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। अगर इंक्वायरी हैंडल दे रहा है ऑफिसर डिसएग्रीमेंट। ने अपनी रिपोर्ट में चार्ज नॉट प्रूव करके लिखा है, वहां की बात कर रहा है ये बेवकूफ। हाँ हाँ इफ हाँ, नॉट नॉट, टेंटेटिव रीजन फॉर एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट की बात कर रहा है, वहां से डिसएग्री कर हाँ, रहा है, तो वो फिर बोलेगा फिर से तुम्हें सब। भेजेगा, फिर से भेजेगा जी। हाँ, और और फिर अगर हाँ, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इंक्वायरी ऑफिसर तो प्रूव ही कर देता है ना, तो फिर तो हाँ हाँ, डिसएग्रीमेंट होता ही नहीं है। लेकिन हैंडल एक रखा है, आप सही बोले हैं, एक हैंडल फिर भी रखा है। देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ ही सो डिजायर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इररेस्पेक्टिव, आगे क्या बोल रहा है, और वेदर इररेस्पेक्टिव द रिपोर्ट इज फेवरेबल और नॉट, फेवरेबल और नॉट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब तो अगर जबरदस्ती जो है थोपने अगर के वो लिए। इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट मान लो चार्ज प्रूव कर दिया और उससे डिसएग्री कर रहा है इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट से, तो भी उसको देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो भी देना पड़ेगा। ये बैलेंस कर रहा मतलब है, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, नहीं बैलेंस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली बैलेंस होता है सर, आप देखें बैलेंस होते हुए कभी? कभी नहीं होता है। डिसएग्रीमेंट इज ऑलवेज टू पनिश द delinquent officer अरे in पहले most इंक्वायरी of the cases। इंक्वायरी अथॉरिटी को पहले ही बोल देते हैं तुमको प्रूव करना है, कैसे भी करके करो। हाँ, कैसे भी प्रिजाइडिंग करके करो। ऑफिसर अगर ऊटपटांग रिपोर्ट दे देता है, चार्ज ऑफिसर के फेवर देता है, तो सस्पेंड कर देते हैं लोग। जी मैं जी, देखा है वहां पे, वो तो बोलते हैं ये सर दिखाने हमारे के लिए है, आ रहे हो। ये दिखाने के लिए है कि यदि फेवरेबल नहीं हो तो भी मैं डिसएग्री करके भेज सकता हूँ। ये गलत, मतलब ऐसे गलत नहीं, मतलब लिखा हुआ है, प्रोविजंस में है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। फिर बोल रहा है डिसिप्लिनरी यहाँ पर भी अथॉरिटी। सीबीसी की एडवाइस आई है मेजर पेनल्टी के लिए, या सीबीआई की कुछ चार्जशीट आई है वहां से, और इंक्वायरी ऑफिसर ने चार्ज नॉट प्रूव किया है, इन लोगों ने हमेशा डिसएग्रीमेंट मेमो दिया ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ रूटीन मेजर ये करते ही है ये। To a pardon, sir, the disciplinary authority shall consider the representation of any submitted by the government servant and record its findings before proceeding further in the matter as specified in sub rules 3 and 4। ये If सब the फॉर्मेलिटी disciplinary है authority आपकी having regard to its findings, ये फॉर्मेलिटी ज्यादा है, मतलब penalties sub class 1 to 4 should be imposed on this, it shall not be descending and contained in rule 16 make an order। देखिए अब आ रहा कमीशन का बात। देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन एवरी केस वेयर इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट द कमीशन, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the commission for its advice, and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the government servant। No. Where it is necessary, देखिए, where it is necessary, now who will decide? The disciplinary authority will decide whether it is necessary और नॉट। उसके हाथ में एक फिर दे दिया, कमीशन को भेजिए। कमीशन का तो जितना काम हम बोले उतना ही अच्छा है ना।
आजकल जो देख रहे हैं आप। यहाँ पे ये भी तो है कि इफ कमीशन है, जो फर्स्ट स्टेज रही थी, अगर वहां पर पेनाल्टी की बात कर रहा है और ये उसे डिफर कर रहा है, तो ये तो उसको भेजना ही पड़ेगा ना। समस्या ये बोल रहा है, मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहा है वो। नहीं, इन एवरी केस वेयर इट इज हाँ नेसेसरी, हाँ, इन एवरी इन केस एवरी वेयर केस इट वेयर इट इज इज। नेसेसरी। नहीं, वेयर इट इज नेसेसरी बोल रहा है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का बात ही नहीं कर रहा, वेयर इट इज नेसेसरी। The व्हाट इज record द of यार्डस्टिक will be of forwarded to the deciding the district. necessity? नहीं, what is the yardstick of deciding the necessity? Every Or what is case, the definition of what is necessary and unnecessary? ये explanation कहीं है अगर सर? मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा? प्रोवाइडेड दैट इन एवरी केस द रिकॉर्ड ऑफ वेयर इट इज नेसेसरी। जरूरत है ना, जहाँ पे नसूस क्या है यार। जरूरत है मतलब मैं सोच सकता हूँ जरूरत है, आप सकते हैं कि जरूरत नहीं है, दोनों चीज है ना। We are two individuals, one of us decide that this is necessary, you may decide that it's not necessary. मैं ओपन स्ट्रीम में बोल सकता हूँ, ये डिसिप्लिन अथॉरिटी को पैसा कमाने का जरिया खोल के रखा है और कुछ नहीं। तो इसीलिए तो भैया आपके नजर में लाया हूँ ये चीज। कौन सा तरीका है बताइए? During the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in this should be पेनल्टी के पहले वही कंसल्टेशन करना होगा कमीशन के साथ। necessary to and shall not be necessary to give the government servant any penalty of negative representation on the penalty proposed to be imposed. Okay. मतलब अगर उसको 5 से 11 के बीच में मारनी है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मौका भी नहीं देगा। न कहा कुछ बोल रहा है सर। प्रोवाइडेड दैट इन एवरी केस वेयर इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट द कमीशन, वेयर इट इज नेसेसरी सोच कर बैठा है। द रिकॉर्ड ऑफ द इंक्वायरी शैल बी फॉरवर्डेड टू बाय द disciplinary authority to the commission for its advice, and such advice shall be taken into consideration before making an order imposing any such penalty on the government servant. Shall be taken into consideration. If the disciplinary authority having regard to 4 पढ़ो ना, 4 वाले में क्या बोल रहे थे? The authority having regard to its finding on all or any All of or any of the evidence adduced on during the the basis inquiry, of evidence adduced, this should be imposed on the government servant. It shall make an order such penalty, and it shall not be necessary to governments to any opportunity of making representation on the penalty imposed. मतलब अगर आपको आपको मान लेना होगा, नहीं है तो आपको वो देंगे भी नहीं, मौका नहीं देगा बोलने के लिए। मौका नहीं देंगे, मान लेना होगा आपको कि जो किया है सही किया। फिर आगे प्रोवाइडेड बोल रहे हैं, फिर वही चीज है ना, सेम चीज है, उसी का कॉपी ऊपर का जो है वही कॉपी किया नीचे। The record of the inquiry shall be forwarded to the commission for its advice, and such advice shall be taken into consideration before making a such order. अच्छा, if the secretary recorded finding is of the फर्क क्या है यार? मेजर पेनाल्टी के तुम चार्जशीट दे रहे हो तो माइनर पेनाल्टी क्यों लगाओगे यार? ये जो ऊपर बोल रहा है 3 में 1 to 4 ये जो है ये 3 माइनर पेनाल्टी है। हाँ। इनको ये मतलब इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद में आएगा कि ठीक है ये माइनर पेनाल्टी के लिए सुटेबल है, मतलब वो अब इंक्वायरी अथॉरिटी जो है चेंज कर देगी उसको। क्या तमाशा, वही तो लिख रहा था, पेनाल्टी स्पेसिफाइड इन दिस should be imposed. No, it shall make an order imposing such penalty. Final orders to be passed, and ठीक है, this is okay, passed by a higher disciplinary authority who instituted the inquiry. Not appropriate to bring in past bad records in deciding the penalty unless it is made the subject matter of specific charges of the charge sheet itself. तो पास बैड रिकॉर्ड मिलने से तो उनको तो मौका मिलता ही, वो तो करते ही है ना, ये डालते ही है, तो कहाँ छोड़ते हैं सर? बाद में नहीं ला सकते हैं, लेकिन छोड़ते कहाँ है? पासिंग ऑफ ऑर्डर्स बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। चलिए ये ठीक है, ये ठीक है। डिले इन पासिंग ऑफ ऑर्डर्स, ये नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड in respect of cases where consultation with CBC and UPSC is required. देखिए, it is imperative that the time limit of 3 months prescribed for other cases
should be adhered to in such cases after receipt of advice of the UPSC. There is no specific time limit, लेकिन 3 महीना का एक प्रिस्क्रिप्शन है, 3 महीने का टाइम लिमिट का एक प्रिस्क्रिप्शन है. No specific time limit has been prescribed in the above when respect of the where consultation is required. It is imperative that time limit. अच्छा, अगर वहां से आ गई तो फिर आपको 3 महीने का ऑर्डर 3 महीने का देना पड़ेगा टाइम, बट इट शुड बी अडियर्ड टू. 3 महीने का अंदर ही मतलब जो है खत्म करना होगा. फिर नीड फॉर, हाँ, स्पीकिंग ऑर्डर्स आर ऑलवेज नेसेसरी. इट्स बोल रहे हैं ना, क्वेज़ी जुडिशियल नेचर, तो स्पीकिंग ऑर्डर होना ही चाहिए. एक लाइन का ऑर्डर चलेगा नहीं ना. देयर शुड बी रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग. Supply of copy of inquiry report, ठीक है, to the accused government servant before the final orders are passed. बार बार वही तमाशा होते रहता है, आदमी उसको पढ़कर जो है परेशान होता है. Reasons for disagreement, if any, should be communicated. हाँ, अब jurisdiction of Central Administrative Tribunal in matter of quantum of penalty against government servant. Number of cases have come to notice of Department with the CAT through agreeing with the decision of the civil authority to hold the charges against the delinquent. Have modified the quantum of penalty on their own discretion to interfere with the penalty awarded by the competent authority on the ground of its excessive representation to the misconduct. Court was examined by the Supreme Court examined this that permanent case, and the court held that tribunal could exercise only such power as the civil court or the high court could have exercised by the civil. The Supreme Court in this case further observed that daylight interference with punishment cannot be equated with the jurisdiction. The tribunal cannot interfere with the finding of appeal के तरह treat नहीं किया जाएगा. It's almost like a revision. appeal के तरह ये treat नहीं किया जाएगा इसको. ये क्या बोल रहे हैं? The tribunal also cannot interfere with the penalty if the conclusion of the inquiry officer or the competent authority is based on evidence, even if some of it is found to be irrelevant or extraneous to the matter. ये तो गलत बोल रहा है. तो ट्रिब्यूनल क्या करता है? ट्रिब्यूनल पूरी पेनल्टी उड़ा देता है ना, बोलता है मैं कम करूंगा ही नहीं, मतलब ठीक है, मेरे पावर नहीं है मेरे पास में, तुम्हारी जो इंक्वायरी है सारी वही गड़बड़ है, वहां से उठा के फेंकता है. फिर हाई कोर्ट जाना होगा, फिर तो वो जाएंगे ना डिपार्टमेंट जाना होगा. We will carve out exception. यहाँ बोलो ना, we may, however. We may, however, carve out one exception in this proposal. There may be cases where the penalty is imposed under Clause A of the second proviso to Article 311(2) of the Constitution, where the person without inquiry is dismissed, removed, or reduced in rank solely on the basis of conviction of a criminal court. ये important है. ये dismissal, removal or reduction in rank यदि किया जाता है solely on the basis of conviction by a criminal court, then the tribunal may examine the adequacy of the penalty imposed in the light of the conviction and sentence inflicted on the person. If the penalty imposed is apparently unreasonable and uncalled for, having regard to the nature of the criminal charge, the tribunal may step in to render substantial justice. The tribunal may remit the matter to the competent authority for reconsideration or itself substitute one of the penalties provided under Clause A. इतना लंबा चौड़ा देने की जरूरत क्या थी यार? क्या मतलब है? लास्ट में 2 लाइन में तो इसको एकदम खत्म कर दिया. Jurisdiction of the CAT is a matter of discipline. अरे छोड़ो यार, क्या करके बातें करते हैं? Jurisdiction of CAT तो है ही. Procedure for imposing minor penalties. Informing in writing to propose to hold inquiry for minor omissions and commissions. The record of proceeding in this case, not withholding contain blah 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 on this. It may withhold increments of pay for a period exceeding 3 years, or with cumulative effect for any period. ये पूरा मतलब ऐसा हाथ में हथियार दे रखा है ना, तो whims and fancies पे ही लोग चलते हैं. Communication of orders तो ठीक है. Entry of punishments in confidential roles. हाँ, ये देखिए, entry of punishments in confidential roles. ये तो खतरनाक चीज है. ये डालने से तो फिर
उसका प्रमोशन पे और सब में इफेक्ट आएगा। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अगर एक केस में 2-4 बंदे इकट्ठा हो रखे तो कॉमन प्रोसीडिंग होती है उसकी, ऐसा बोल रहा है। फिर 19 स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस, ये क्या है भाई? Where penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. Where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules. Where the president is satisfied that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold an inquiry in the matter provided in these rules. The disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit, provided that if the government servant may give that the government servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed or to be imposed before any order is made in a case under clause 1, provided further that the commission shall be consulted where such consultation is necessary. देखिए यहाँ क्या बोला, where such consultation is necessary, इसमें क्लैरिफिकेशन का ही नहीं है, नेसेसिटी के ऊपर है. Before any orders are made in any case again under this rule. Scope of second proviso to Article 311(2) of the Constitution. अच्छा, 3 exception बता रहा ना. Even under these 3 circumstances, the judgment does not give unbridled power to the competent authority when it takes action under any of the 3 clauses in the second proviso of this. The competent authority is expected to exercise its power under due cautions and considerable application of the principle to be kept in mind while taking action under the second proviso has been defined in they are reproduced in the succeeding paragraph. Okay. An action taken this and this service is similar to this society that the judicial authorities should be aware that government servant has been convicted on criminal charges, but this awareness alone will not suffice. Having come to know the conviction servant on criminal charges, the authority must consider whether his conduct which had led to his conviction was such as warrant the position of penalty. अच्छा, तो पढ़ना पड़ेगा उसको पूरे को. ओके, ऑडियो को उसको पढ़े ऊपर से पूरा. Because there are various situations arising ना इसमें, एक situation नहीं है. ये warrant कर रहा है. If it warrants the, I mean, causing of this, causing of that करके, तो ये पूरा ही पढ़ना होगा. पढ़ता हूँ सर. तुलसीराम पटेल. In the first place, it may be understood that the Supreme Court, in its judgment, has not established any new principle of law. It has only clarified the constitutional provisions as embodied in Article 311(2) of the Constitution. In other words, the judgment does not take away. Judgment मतलब वही तुलसीराम पटेल वाला judgment बोल रहा है, does not take away the constitutional protection granted to the government servant by the said article, under which no government employee can be dismissed, removed or reduced in rank without an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity to defend himself. इतना देर तक तो वही पढ़ रहे थे. It was only in 3 exceptional situations listed in clauses A, B and C of the second proviso to Article 311(2) that the requirement of holding an inquiry may be dispensed with. वही है ना, वो जो सर्वेलेंस करता था, स्पाइंग करते हैं, उसमें तो सवाल ही, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता कुछ. इंक्वायरी क्या इवन अंडर, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इवन अंडर these 3 circumstances the judgment does not give unbridled power to the competent authority. The competent authority is expected to exercise its power under this proviso. Unbridled power नहीं है. By taking in under this second proviso, considerable application of mind rule have been defined by the Supreme Court itself. These are reproduced in the succeeding paragraphs for the information and guidance. अच्छा, when action is taken under so and so or any other service rule similar, the first requisite is that the disciplinary authority should be aware that a government servant has been convicted on criminal charge.
But this awareness alone will not suffice. Having come to know of the conviction of a government servant on a criminal charge, the disciplinary authority may consider whether his conduct, which had led to the conviction, was such as warrants the imposition of a penalty. ये जगह important है, and if so, what that penalty should be. For that purpose, it would have to peruse the judgment of the criminal court and consider all the facts and circumstances of the case. In considering the matter, the disciplinary authority will have to take into account the entire conduct of the delinquent employee, the gravity of the misconduct committed by him, the impact which his misconduct is likely to have on the administration, and other extenuating circumstances or redeeming features. This ये सर ये लिख देता है ये सब, मतलब दिस इज ऑल लिप सर्विस डन हियर. वो बोलता है कि आप क्रिमिनल केस में आपका ऐसा हुआ है तो इसका ये इम्पैक्ट हुआ. has been undergone a change with the operation of first proviso to the rule 19 डाल दिया बोलता 19 में इसको, which may be taken. This too has to be done by the authority. The principle, however, to be kept in mind is that the penalty imposed upon the civil should not be penalty का बात कर ही रहा, should not be grossly excessive or out of proportion to the offense committed. ये point तो हम लोग हमेशा लेते हैं, that the penalty imposed is not commensurate with the misconduct. ये बोलते हैं ना सर हम लोग, ये point तो लेते हैं. The penalty imposed is so grave that it is not commensurate with the misconduct proved. After the comment passes, the request is indicated in the proceeding by the government servant who is agreed by a candidate and appeal, revision or review as the case may be. The penalty was too severe or excessive, none warranted this. If this case has to भाषण सर ज्यादा है सर, इसमें भाषण ज्यादा है, कोई काम का कुछ है नहीं. The person who was in fact convicted, he can also reject the question. In appeal, revision of ये तो है ही. The person and still want to peruse the matter. He can seek judicial review. Which term include tribunal blah blah blah, but ठीक है. इसमें tribunal. Okay. Which we'll go into the question whether the impugned order is arbitrary or grossly excessive or out of proportion to the offense committed. जो मैं बोल रहा था, or not warranted by the facts and circumstances of the case or the requirements of the particular service to which the government servant belongs. ये tribunal decide करेगी. Coming to clause B of the second proviso, there are two conditions precedent which may satisfied under blah blah blah. What is the may exist a situation which make the holding of inquiry contemplated not reasonable, practicable? What is तो reasonably practicable नहीं होना चाहिए. When a civil holding servant of inquiry is not reasonably practicable. Threaten or intimidate witnesses. हाँ ये तो ठीक है. Okay. Where the civil servant himself or through this intimidate, threaten, terrorize the officer who is disciplinary authority or member of his family so that the officer has to touch the atmosphere of violence, general indiscipline. Disciplinary authority is not inquiry likely or insubordination prevails at the time. To avoid the holding of inquiry. ठीक है. इसमें तो सीधा ठोक देगा ये सब करने से. Rule is that the disciplinary authority should record in writing the reason for not. Reasons always to be recorded in writing. नया कुछ बोल नहीं रहा है इसमें. Important guidelines with regard to the other than the power of judicial review. Dismissed or removed from service or reduced in rank, blah blah blah. This can appeal check. As regard action under this, the constitution which is required of. प्रेसिडेंट गवर्नर को थोड़ा सा मतलब वो पावर है ना इसमें. This is for the president or governor as constitutional authority arrived. If the inquiry is dispensed with inquiry, this satisfaction is for the president or the governor. President or governor मतलब वही जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसी का है. जी जी जी. हाँ तो वहाँ थोड़ा सा आप अपना पैरवी कीजिए तो फिर हो जाएगी. This and this report therefore imperative that these clarifications are not. सब बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन जो दिख रहा है वो मुंह से निकल ही जाता है सर. बोलना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, 4 चीज इश्यू करेगा, चलो मान लेते हैं. 20 में क्या बोल रहे हैं?
प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिसर लेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, लियन में जो है वो उनके साथ फिर वही करेगा ना, यहीं पे भेज देंगे हाँ ना, वही करेगा प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिसर बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। उल्टा हो जाएगा, जहां का है वहीं जाएगा वो मामला। मतलब यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का चक्कर है ना, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगी वो। ये हो गया प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिसर्स बरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये हम लोग बाद में करेंगे, ये पार्ट 7 ये अपील बाद में है। हाँ ये बात कब, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। बस शॉर्ट में सर ये बताइए कि इनको इतना ज्यादा लिवरेज दिया गया है कि कुछ भी इन लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई आदमी को सताना चाहे तो आप कोर्ट ट्राइब्यूनल करते रहिए, कभी रिमांड बैक कर देगा, लेट फ्रेश इंक्वायरी बी हेल्ड अगेन, फिर आदमी फंस जाएगा। तमाशा करते डी नोवो सर, ये लैंग्वेज यूज करते हैं, डी नोवो इंक्वायरी। हाँ गए फिर काम से। नहीं, वो डिपेंड्स करता है कितने साल के बाद में, कितने साल तक चली थी। अगर मान लीजिए 4-5 साल तक तुमने डिले कर दिया तो बोलते हैं देयर इज नो, मतलब इट्स ऑलरेडी No ground to- ऑलरेडी रिटायर्ड, ऐसा करके भी बोलते हैं ना वो लोग। सर सब कुछ मेरा कहना ये सर, जो जज बैठा है ट्राइब्यूनल में उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। चलो इन अंदर लोग कौन तो आ रहा है, अंदर आ जाओ सर इन लोग जिसको तो आना है। गलत करेंगे सर। एक मिनट सर, ये आप तो जानते हैं इन लोग तो गड़बड़ करेंगे। दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव अ पर्सन गिल्टी एंड इम्पोज मैक्सिमम पनिशमेंट। फिर जब ट्राइब्यूनल जाता हूँ तब ये सब सवाल उठेगा। फिर मैं तो ये एक बात जानता हूँ कि अगर मैं डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे को मेरा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अगर वो मुझे चार्जशीट दे रहा है, तो हाउ कैन ही डिसाइड माय फेट? सीधी बात तो ये, द पर्सन हु इज चार्जशीटिंग मी कैन नॉट डिसाइड माय फेट। यहाँ पर तो ये हो रहा है उसी बंदे को तुम आप डिसिप्लिनरी बना देते हो। A person who is issuing charge sheet me is already biased. Definitely. So how can I expect that that person will give you justice? Of me? Give you justice. फिर अगर चार्जशीट कोई इशू करता है तो जो दूसरा कोई बंदा मेरे ऑर्डर पास करे ना, तो बात भी है। वही बंदा जो है चार्जशीट इशू करता है, तुम ही चोर, तुम ही साले पहरुआ हो जाते हो, तुम ही पहरेदार बन जाते हो। वो कोई तरीका होता है? जबकि जुडिशियल में क्या होता है कि if a person is passing an order, then फिर वो बंदा उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, कहीं और जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर तो ये होता है कि पता नहीं कितने फैक्टर होते हैं। अरे बीबीसी से मेरी दुश्मनी है, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल दिया इसके चार्जशीट दे दे इसको, और फिर अगर देते हैं। ऐसा भी तो होता है। Anyway, होता है, बिल्कुल होता है सर। 1 घंटा 18 मिनट हो गए हैं, इसको हम अब बंद कर देते हैं, बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये बाकी सब के लिए इंटरेस्ट का नहीं है। मेरे ख्याल में निखिल आ गया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। जी। So we are closing this stream. We'll be covering CCS, CCA rule from 22 to onwards. उसको हम लोग उस दिन खत्म कर देंगे। अपील हम लोग कवर कर लेंगे। अपील रिवीजन रिव्यू सबको खत्म कर देंगे वहां पर। और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो हमारे लिए भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हमारे वीडियो को लाइक करिए। जी। और हम मिलते हैं कल किसी और मुद्दे के साथ में, इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।